Good morning, children. How are you all? I hope you all are happy and safe in your house, studying proper. Last classes we have finished our prayer, lesson 1. We have read proper, learned proper, and you have written the unit test also. Now we will start our lesson 2. This is a very good story. I'll read for you and together I will translate in English also. Your lesson 2 name is बुद्धिमान हक्कू. What is the lesson name? बुद्धिमान हक्कू. ब पे छोटा ओ की मात्रा बू, हाफ द, ध पे छोटे ई की मात्रा धी, म पे आ की मात्रा माँ, एंड न. बुद्धिमान. बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट. ओके, बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट. ह हाफ क, फुल क, एंड क पे बड़ा उ की मात्रा कू, हक्कू. बुद्धिमान हक्कू. In the story, one name is there, Hakku. Hakku is a frog. Hakku is a frog. You all know the frog? Jumping. It's living in pond and any water. Any type of water will be there. Dirty water, it will be there. Hakku is a frog name. So we'll start the story. शहर के पूर्व में एक तालाब था. इन सिटी ईस्ट साइड देयर वाज अ पॉन्ड. उसके किनारे आम का वृक्ष था. ऑन द बैंक ऑफ दैट पॉन्ड देयर वाज अ मैंगो ट्री. उस पर बहुत सारे कच्चे पक्के आम थे. ऑन दैट मैंगो ट्री लॉट ऑफ रॉ एंड राइप मैंगो वाज देयर. उन आमों को तोड़ने के लिए बच्चे पत्थर मारते थे. टू प्लक दैट मैंगो चिल्ड्रंस आर थ्रोइंग स्टोन ऑन दैट ट्री. ओके चिल्ड्रन. उसी तालाब में एक मेढक रहता था. इन सेम पॉन्ड देयर वाज अ फ्रॉग. उसका नाम हक्कू था. दैट फ्रॉग नेम वाज हक्कू. एक दिन जब बच्चे आमों पर पत्थर मार रहे थे, one day when children are throwing stone on that mango tree, तो वह डर कर बाहर आया. Then he got very scared and he has come out from the water. और किनारे पर बैठ गया and he sit on the bank of the pond. उसी समय रक्कू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा. On that time one crow has come. That crow name is रक्कू. Okay, so उसी समय रक्कू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा. On that time रक्कू the crow has reached there. So in this story, Hakku is a frog name and Rakku is a crow name. हक्कू को देख उसने उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया. सो दैट क्रो रक्कू ही saw the हक्कू means froggy and just he has catch the frog in his beak. हक्कू he has catch. रक्कू कौवा हक्कू मेढक को ले वृक्ष की ढाल पर जा बैठा. रक्कू has hold the हक्कू the frog and sit on the branch of the tree. वह उसे खाने की तैयारी करने लगा. He began or he started to eat him. हक्कू बुद्धिमान था. हक्कू was very intelligent. Who was the हक्कू in this story? Frog. So हक्कू बुद्धिमान था. हक्कू was very intelligent. उसने कौवे से कहा. He told to the crow. Rakku is a crow. He told to crow, भैया, अन्ना और brother, मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ. I am very dirty in mud. I was in mud. I am very much dirty. पहले मुझे धो लो. First you wash me. फिर स्वाद से खाना. Then you eat me. Okay? You enjoy me. So what Hakku told? Hakku was very intelligent.
he told to crow, भैया, अन्ना or brother. भैया means brother or अन्ना. मैं मिट्टी से गंदा हो गया हूँ. I am very much dirty with mud. पहले मुझे धो लो. First you wash me. फिर स्वाद से खाना. Then enjoy and eat me. हक्कू की बात सुन. रक्कू बहुत प्रसन्न हुआ. To listen this, रक्कू, the crow, he become very happy. वह हक्कू को चोंच में दबाए तालाब के किनारे पहुंचा. He took the हक्कू and reached to the bank of pond. Okay, near to pond, he went there to wash the हक्कू. धोने के लिए उसको नीचे रखा और पानी लेने के लिए तालाब की ओर मुड़ा. To clean the froggy हक्कू, he kept him down and went to the pond to pick up the water. तभी मौका पाकर हक्कू ने पानी में छलांग लगाई. Then हक्कू got a chance and just he jumped to the water. और गहरे पानी में चला गया and he has gone deep inside the pond. रक्कू कौवे ने आवाज लगाई. रक्कू the crow, he was calling हक्कू हक्कू. Okay, just he start to call and he start to search where is हक्कू. रक्कू कौवे ने आवाज लगाई. रक्कू start to call हक्कू हक्कू, where are you? कहाँ हो? Where are you? अरे भाई, ओ अन्ना, ओ ब्रदर, where are you? So रक्कू started to call हक्कू. हक्कू बोला. हक्कू means the frog told, कौवे भैया, कौवे भैया, ब्रदर क्रो, मैं अपने घर में हूँ. I am in my house. तुम भी अपने घर जाओ. You also go to your house. रक्कू कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया. That रक्कू crow, he become very sad and he has run away. So what is the moral of the story? You all people listen carefully the story. Now what is the moral of the story? What you have learned? बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल हो सकता है. Means with wisdom any problem can be shut out. So when problem is coming, you should not feel very panic. You should not be panic. You should think and you should shut out your problem. See this hक्कू, even crow has catch him. He supposed to eat him, but in that moment he is not afraid. He think and he told, I am very much muddy. On my body too much mud is there. Please first wash me. So he got a chance and he has jumped inside and he saved his life. Okay, so wisdom can help to come out of any situation. So if you are intelligent, you are very smart, with any problem you can come out. Okay children, so how was the story? In house try to read your story. Okay children, so we have read our lesson 2, बुद्धिमान हक्कू, intelligent हक्कू. हक्कू was the froggy and रक्कू was the crow. So you all understand the story. Now time for word meaning. Word meaning, listen carefully, you have to memorize, and for your assignment you have to write same thing, your word meaning. Okay children, so I will read for you, you listen carefully and memorize in house. First one, त तपया की मात्रा ता, ल लपया की मात्रा ला, and ब, तालाब. तालाब means pond, P-O-N-D, pond. Pond means तालाब. Second one, क कपे छोटी की मात्रा की, न नपे आ की मात्रा ना, र रपे ए की मात्रा रे, किनारे. किनारे means on the bank. Where हक्कू has come and sit? On the bank of the pond, means
किनारे। ब थर्ड वन, ब पे ए की मात्रा बैठ, बैठ। ग य पे आ की मात्रा या, बैठ गया। बैठ गया मीन्स sat down, sat down, okay। च फोर्थ वन, च पे ओ की मात्रा चो एंड वन डॉट इज देयर मीन्स ङ, चो, च, चोंच। म पे ए की मात्रा में एंड डॉट में, चोंच में। चोंच मीन्स इन द बीक, में मीन्स इन द, THE द, बीक BEAK, इन द बीक। फिफ्थ वन, ड पे आ की मात्रा डा ल, डाल। प र पर, डाल पर। ऑन द ब्रांच, ON ऑन, THE द, ब्रांच BRANCH, ब्रांच, ऑन द ब्रांच। सिक्स वन, ध पे ओ की मात्रा धो, न पे आ की मात्रा ना, धोना। धोना मीन्स टू वॉश, TO2 WASH, WASH, वॉश। धोना मीन्स वॉश, टू वॉश। त भ पे बड़ी की मात्रा भी, तभी। तभी मीन्स at that moment, AT at, THAT that, MOMENT, moment, at that moment। तभी, तभी मीन्स at that moment। म पे आओ की मात्रा मौ, क पे आ की मात्रा का, मौका। म पे आओ की मात्रा मौ, क पे आ की मात्रा का, मौका। मौका मीन्स opportunity, मौका मीन्स opportunity। OPPOR TUNITY। once more we'll read, OPPOR TUNITY, opportunity means मौका। छ ल पे आ की मात्रा ला, चंद्रबिंदु, ला एंड ग, छलांग। once more see, छ and ल पे आ की मात्रा ला and top चंद्रबिंदु is there, so ला ग, छलांग। छलांग means jump, okay, छलांग means jump। last one, आ व पे आ की मात्रा वा, ज, आवाज। आवाज मीन्स वॉइस, आवाज मीन्स वॉइस, VOICE, okay children। once more we will read from the starting। तालाब, तालाब means pond। किनारे, किनारे means on the bank। बैठ गया, sat down। चोंच में, in the beak। डाल पर, on the branch। धोना, to wash। तभी, at that moment। मौका, opportunity। छलांग, jump। आवाज, voice। Okay children, so today we have read story. We understand the story meaning in English also and word meaning. In your assignment, this word meaning you have to read and write one time. Okay children, so memorize all word meaning. Be safe, be happy in your house. Okay children, see you